Hello, what's up, everybody? This is Mukesh and welcome to my YouTube channel MG Zone. सो गाइस आज है दिन शनिवार. सो आज हम लोग जा रहे हैं आह्वाडांग. आह्वाडांग में प्लेस है देवीना माड़ करके, ऐसा देवीना माड़ ऐसा कुछ नाम है उसका. तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी. हम मतलब On TV now I'm back in my zone. Cop every delivery like down on my phone. It's like therapy and mentally I'm bad to the bone. Cause I've been working, I've been hustling for years now. Working on my penmanship and हम टोटल 8 जन हैं. अभी वेदर अच्छा है तो मज़ा आएगा जाने में. वो आह्वा की सीक्रेट प्लेस है. सीक्रेट प्लेस नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने उसको सीक्रेट प्लेस बना ली है. तो वहाँ आह्वा में वो कैंप साइट है, वहाँ पर सब लकड़ियाँ का ऐसा कुछ घर है उसमें. हम वहाँ मतलब 1 नाइट स्टे करने वाला है वहाँ पर. आपको दिखाता हूँ मेरे साथ कौन कौन है. और ये विशाल भाई और तेजस ब्रो. अब जीत, मयंक और डिवाइडर. विशाल हाय हाय. ચાલુ છે. सो गाइस हम सॉरी बीच में रोकने के लिए, क्योंकि हम पहले देवीनामाल से पहले जाएंगे हम चिमेर वाटरफॉल. और चिमेर वाटरफॉल गुजरात में सबसे बड़ा वाटरफॉल ऐसा है, मतलब ऐसा माना जाता, मतलब है ही. चिमेर वाटरफॉल ये गुजरात का सबसे बड़ा वाटरफॉल है. जहाँ बाइक नहीं जा सकती थी वहाँ हमने बाइक घुसा दी और वहाँ फाइनली हम पहुँच गए. फाइनली वहाँ हम चिमेर डोत पहुँच गए. और वहाँ चिमेर डोत मतलब अच्छा है, वहाँ ड्रोन होता तो बेस्ट आपको शॉट्स मिलते, बट कोई बात नहीं. तो फिर देखिए. how often people mad at me for always staying busy, not visiting the family, for always being picky and busy with the strategy. I don't have time to chill or that basic ass mentality. I swear I'm about my business, you can catch me on the come up. My body got no limits, so I'm riding till the sun up. I live behind the bars, I might as well just have the gun up and fire a couple shots that I would later have to dumb up. But fuck that, I hang on my own. Pop Gary B on TV, now I'm back in my zone. Cop every delivery like down on my phone. It's like therapy and mentally I'm bad to the bone. Cause I've been working, I've been hustling for years now. Working on my penmanship and humbling my peers down. Working on myself while funneling my fears down. While they are bar hopping, puzzling the beers out. I might be wrong, but this is my confession. My head's about to pop if I don't drop this conversation now. I hate fake people
that get legal. With all the immigrants talking about we ain't equal. We ain't the same people, say the same people that taking aim, they be praying we remain illegal. But being an immigrant sucks. Stereotyping now is crazy, man, the president's nuts. The rest of us bums hated even resident ones. Be scared of dealing with the public's arrogant tongues. Irrelevant punks tweeting malevolent chunks. हाँ तो गाइस फाइनली हम चिमेर धोध पहुंच गए हैं, चिमेर वाटरफॉल। और यहाँ पर लोकेशन एक नंबर है, हवाडांग मतलब ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, मैं ऐसा कह सकता हूँ, आप मान लो। मतलब गुजरात का बिगेस्ट वाटरफॉल यहाँ पर ये चिमेर धोध है। आप चाहिए ना आपको सिनेमैटिक, तो ये सिनेमैटिक है आपके लिए। हाँ तो गाइस अभी हमने ये वाटरफॉल को एंजॉय कर लिया है। अभी हम जाने वाले हैं देवीना माल। हमें इतना टाइम क्यों लगा, अभी 4 बज गए, हमें इतना टाइम क्यों लगा कि हम ऐसे एकदम शांति से आ रहे थे, तो इसलिए ये देवीना माल बारडोली से आई थिंक 105 किलोमीटर्स है। तो हम ऐसे नेचर कैसे मतलब फील कर कैसे जा रहे हैं, तो ठीक है, मिलते हैं अभी रोड में। हाँ तो गाइज़ अभी हम हवा से 6 किलोमीटर पीछे अभी, और यहाँ पर मैं और विशाल भाई अभी खड़े हैं यहाँ पर इस 4 रास्ते पर। सभी हमारे मेंबर्स अभी पीछे आ रहे हैं, सो हम पहले पहुँच गए तो हम उसका भी वेट करेंगे और फिर बाद में प्रोसीड कर देंगे। बाय बाय। हाँ तो गाइज हम देवीना माल पहुंच तो गए थे, लेकिन वहां जाके हमारा पोपट हो गया, क्योंकि वहां पर देवीना माल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो इसलिए हमें एंट्री नहीं मिली और वहां पर वो बंद था। तो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम किस लिए चल रहा था, मतलब पहले वहां रहने देते थे, अब भी वो डेवलप हो रहा है ना, तो इसलिए हमें एंट्री नहीं मिली। और फिर हम वहां से निकल गए। बहुत बड़ा पोपट हो गया। तो फिर हम वहां से निकल गए और हमने सापुतारा में जाने का फैसला कर लिया, और हम सापुतारा में पहुंच भी गए, लेकिन सापुतारा में रूम की तलाश उस दिन सैटरडे नाइट थी। सैटरडे नाइट हमने 5 से 6 होटल ट्राई की, सारी की सारी सभी की सभी होटल फुल। तो ऐसे तैसे कैसे हमें सापुतारा में एक होटल मिली और वहां पर हमने नाइट स्टे किया। सो जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो चीज़ तो बंद थी, तो फिर इससे बड़ा पोपट और क्या। तो ये व्लॉग बस इतना ही था कि हमारा पोपट हो चुका था, फीलिंग पोपट।
हाँ तो गाइस अभी हम साबुतारा पहुंच गए हैं और निकुंज, मयंक और विशाल भाई। तो गाइस आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा क्या बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया शहर? शहर बड़ा तो अभी जीतो और सारे लोग अभी आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर अभी हम रूम खोजेंगे, मतलब रूम की तलाश करेंगे और फिर स्टे करेंगे वहाँ पर। घूमने जाएंगे। यस, अभी भूख लगी है तो पहले खाना खाएंगे। या ब्रो, सो या गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अभी साबुतारा में और ये कुछ व्यू है। कल हम देवीना मॉल से अब साबुतारा आ गए थे क्योंकि देवीना मॉल कल बंद था, वो हमें पता नहीं था, तो हम सीधा साबुतारा में आ गए। और ये दिस इज द व्यू। कल मैं इतना थक गया था तो मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया था, तो सॉरी फॉर डैट। और ठीक है, ये देखिए आप रूम। सो गाइस मैं अभी से पूछता हूँ रात को नींद कैसे आई निकुंज? मुझे तो बहुत अच्छी आई। मच्छर थे थोड़े लेकिन चलता है भाई। बढ़िया, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। विशाल भाई कैसे नींद आई? बहुत बढ़िया। मयंक 2 बजे तक मैं तो यहाँ पर बैठा। डिवाइडर बहुत अच्छी है। Devil in a red dress.